Have you ever got confused? What to do first in a math expression, addition or multiplication? कभी ऐसा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो गए हो पहले क्या करें प्लस या मल्टीप्लाई? Hello students, welcome to Maths with Kanika ma'am. Today we are going to learn arithmetic expressions. Exercise 2B part 5. So stay focused and let's begin. Let's start solving using BODMAS rule. याद रखना है BODMAS रूल में क्या करते हैं हम पहले ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, फिर ऑर्डर्स, फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ we have to solve the first problem. First, we solve from left to right since only plus and minus sign is here. Okay. Now, when 52 plus 31 is equal to 83 minus 15. So, 68. Now, we solve 2. First, we solve from left to right. क्योंकि यह only plus और minus sign है. तो minus 41 plus 23 is equal to minus 18 minus 5, which is also equal to minus 23. ओके, नेगेटिव नंबर्स में साइन का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. ओके, फर्स्ट वी हैव टू डू हियर मल्टीप्लिकेशन. बदमाश रूल में क्या है? बदमाश रूल में ब्रैकेट, ऑर्डर of division, multiplication, addition, then subtraction. So here we use multiplication first. 17 plus 20 and which is equal to 37. Multiply पहले होगा फिर addition होगा. Add, यह भी मल्टीप्लाई पहले होगा फिर सब्ट्रैक्शन. 35 minus 3 1s are 3, 3 8s are 24, 2 4 3 35. दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 802 208 और 243 का पहले माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा. ओके, नाउ 5 क्या है? 9 7 से 63 प्लस 12 3s are 36. Now 99. Same level operations, step by step solve. Okay. 6 में क्या है? यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है. पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 15 8s are 120 minus 15 3s are 45. So 125 minus 45 is equal to 75.
कॉमन फैक्टर भी निकल सकते थे यहाँ पे। कैसे? 15 8 minus 3, so 15 minus 5, 15 5s are 75. ओके, यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे? बदमाश रूल्स याद है? मल्टीप्लिकेशन पहले है, तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 12 5s are 60 प्लस 48 minus 3 13s are 39. So यहाँ पे क्या होगा? सेम लेवल ऑपरेशन से, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट। ओके, तो 60 प्लस 48 108 माइनस 39 108 39 क्या होगा? 9 how much? 89 carry 1 4 how much? 10 6, so the answer will be 69. Here we use the BODMAS rule. BODMAS rule means bracket of division, multiplication, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Here we see the division is here. So 7 minus 3 plus 20 division 4 क्या होगा? 5. Now 4 plus 5, this is equal to 9. Division पहले, फिर subtraction, then addition. Okay. Now 9. Here also use BODMAS, BODMAS rule. First क्या है? Brackets. So 5 minus 3 2 plus 3 multiplication 7. 4 2s are 8. Now we use multiplication plus 3 7s are 21. Okay. 8 plus 21 29. Here bracket first 6 6 division 3. The answer should be 2. Bracket clear, then division. Okay. Here 15 plus bracket first BODMAS rule. Okay. So BODMAS rule में क्या है? Brackets first 4 multiplication 4 plus 20. Now multiplication should be fast. 15 plus 4 4s are 16 plus 20. So 51. Here 33 plus 5. Multiplication here. Here also multiplication. Here also is multiplication. Then what should be first? 165 plus 33 into 11. 3 11s are 33. Carry 3. 33 plus 3 363. Okay. Minus
3 sevens are 21. 1 carry 2, 21 or 2, 23. Now 165 and 363, 8, 12, carry 1, 5, 2, 3, 1, which is also equal to 7, 9, 2. Here कॉमन फैक्टर 33 निकाल सकते हो. 5 plus 11 minus 7. 33. 5 plus 11 means 16 minus 7. 33 into 9. 3 nines are 27. 27 का 7 carry 2. 3 nines are 27 और 2 29. ओके, ये फर्स्ट मेथड है, एग्जाम में यूजफुल. Great job, students. Today we learn how to solve arithmetic expression using BODMAS rule step by step. Keep practicing more problems to become faster and more accurate, okay? If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Ta-ta!